Let's welcome Mr. Harsh Bhatt, who is likewise interning at AWL Incorporated. Could you share a bit about your academic and professional path so far? Yeah. Hello everyone. My name is Harsh Bhatt and I'm a third year undergraduate student of the Department of Chemical Engineering enrolled in its BTech course, and I'm currently AI engineer at AWNC and doing summer intern there. Yeah. Much appreciated, Mr. Harsh. Before we dive into our main set of questions, let me offer a massive congratulations to the three of you for securing such great internship roles. Let's kick things off with a fundamental query. When did you decide to target data related profiles specifically? What all the factors do you consider before taking this decision? Ms. Suhani, why don't you share your thoughts first? Yeah, sure. I don't think there was one specific moment. Over time, I realized that the projects and competitions I enjoyed the most were the ones where I was solving problems using data rather than building software products from scratch. From my research projects, case competitions, and internships, I found myself spending more time on analysis than other segments, and I enjoyed it as well to pursue it further. So, there was not as a very particular path which I followed to choose data, but it eventually became an interesting field for me. Mr. Aditya, what was your experience like? Yeah, I think for me, I guess around the end of first year, I was first introduced to this world of machine learning. And in this, once you get started, I think in the starting, when you get easily hooked up to this world. And so yeah, again, there's from that onwards, I started exploring more of learning, obviously, the different domains and all. And it was obviously balancing CP along with machine learning to get into this data. And for CDC, I don't think there was a specific time that I could decide to switch over to data or something because it was obviously managing both the things at the same time. Harsh, is there anything you'd like to add? Yeah, I started my machine learning journey from my first year, and I narrowed down to the data profile after realizing that I enjoyed extracting the insights and the solving decision making problems. So some of the factors I considered, like I have a very interest in mathematics, the statistics and the analytical thinking part, the enjoyment of working with data and the experimentation with machine learning and the deep learning things. And there are also the growing in the industry demand for the data scientists, the analysts, and the ML engineers. So, and I like to do more experiment towards it. Thank you for all the Okay. answers. Yeah, okay. Moving to next topic. For those unsure about which portfolio to pursue, mainly choosing between software or data, how did you narrow it down to data related profiles? Like, what would your advice be for the juniors choosing now? Aditya, could you lead the way on this? Yeah, sure. I think actually you don't really need to choose between these two because the advice which I always give to everyone is don't jump into CDC with just a pure data profile. That's just self-damaging. You have to do SD along with data. But yeah, if to focus on more on this field, you have to really get interested in it. Like it's like I've seen most of the people they do these machine learning competitions and all, but they just feel like it's mostly repetitive stuff and they need to memorize a lot of things. But it's not like that. You need to explore different things, different algorithms and all, so that you yourself get interested in this. And yeah, between choosing SD and data again, don't choose. Just try to focus on both. Okay. Suhani, do you have any perspectives to share? Yeah, like I understand the dilemma of choosing between SD and data. Even I explored both SD and data initially, but obviously I would suggest to all the juniors that you should try with small projects
on both of them. Try exploring both of them a little bit, and then try to find your strengths in which you are finding. Because if you're going to pursue both of the fields simultaneously, it's going to waste your time. SD and data only have one thing in common, which is DSA. Apart from that, both have very different fields and different topics to cover. So I would suggest try going with small projects and find your strengths and move forward with that. Harsh, would you like to add your thoughts to this? इन माई ओपिनियन कि अगर तुम एक्चुअली ऐसे डायलेमा में हो कि तुमको एसडी करना चाहिए या डेटा करना चाहिए रेदर देन प्रिपेयर फॉर बोथ, क्योंकि अगर तुम्हें सीडीसी में जाना है तो तुम्हें डीएसए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज दोनों मांगती हैं एंड डीएसए इज लाइक जस्ट ए कोडिंग टूल की तुम्हें पता ही होना चाहिए फॉर जस्ट हाउ टू डू कोडिंग इन बोथ। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही करनी चाहिए इनिशियली। तो स्टिल आई एम डूइंग बोथ। मैं डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई भी इंटर्न भी करता हूँ तो मैं दोनों करता हूँ साथ में। एंड डेटा में भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं कि इफ़ यू वांट टू ओनली परस्यू द डेटा एनालिटिक्स पार्ट देन देयर इज़ ए होल फुल वे टुवर्ड्स दैट। बट अगर तुम्हें ऐसे डेटा साइंस करना है, डेटा साइंस में काफ़ी पार्ट है जो कि एसडी से बहुत सारे ओवरलैप करते हैं, तो द वेन डायग्राम पूरा ओवरलैप होता है। यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स एक्चुअली अच्छे से, देन तुम आपसे तुम्हारे डायलेमा खुद ही खत्म होगा कि तुमको प्रॉपरली डेटा इंसाइट्स एंड डेटा एनालिटिक्स पार्ट में जाना या तुमको मिक्सचर ऑफ दैट ओवरलैप ऑफ दैट पर्टिकुलर उसकी तरफ टुवर्ड्स आना। So, That provided a lot of clarity. Thank you so much. How did you approach the preparation for CDC during summers? Like concepts like probability, statistics, and machine learning algorithms during your preparation. Did you code things from scratch or did you revise only the concepts? And what resources would you suggest for the preparation of the same? okay. Mr. Harsh, would you like to start? यस यस मोस्टली मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इन जनवरी, लाइक स्टार्टेड विद डीएसए। एंड क्योंकि सीडीसी में मोस्टली तुमको डीएसए ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर्न के लिए उनकी प्रेफरेंस मोस्टली बहुत बेसिक लेकर आते हैं कि हमको बस ऐसे पर्सन चाहिए जिसको बस ऐसे फंडामेंटल्स क्लियर हो, नॉट वेरी एडवांस थिंग्स कि सब कुछ उसको आना चाहिए एंड द थिंग। सो फॉर द डेटा पर्पसेस ऑल्सो कि मैंने अपने पूरे समर में तो डीएसए की प्रैक्टिस करी थी, बट लास्ट के 15 to 20 डेज मैंने फुल डेटा को रिवीजन किया था। एंड डेटा रिवीजन इज नॉट जस्ट कि मैंने सारा कोड अपने प्रैक्टिकली सब कुछ लिखा, एंड क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन द इंटरव्यूज कि तुम सारा कोड सारी लाइब्रेरीज स्क्रैच से लिखो, बट तुमको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ की कि क्या चीज़ें कैसी चलती है। तो थियोरटिकल वाइज मैंने काफ़ी सारा रिविजन किया था। several resources are present in YouTube also, there are books present also, so उन्हीं से मैंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, अपनी थियोरटिकल नॉलेज जो कंसेप्चुअल नॉलेज है डेटा फील्ड में उसको स्ट्रॉन्ग किया था। yeah. Yeah. So, Aditya, what did your learning roadmap look like? Yeah, I think for me, it was like in my second year, I was mostly doing CP and along with exploring data. And yes, obviously, there comes a time when you have to switch over to purely learning DSA because in CDC specifically, even for data interviews, TSA is a must requirement. So I think when it was the start of the summer vacations, then I actually began with TSA. That was a bit late, I would say. For the juniors, I would say please try to start a bit early, maybe like around January or February, start of the fourth sem. And yeah, it was like you have to DSA for both profiles. So majorly in the starting, I was focusing heavily on DSA. And then afterwards, when I think the CDC portal opened, that time I started revising my machine learning concepts because as you said that you don't have to necessarily know everything in data. It's just what you know with, be confident with that. And you can go in the depth, but just be confident in what you know. And yeah, and also about the coding thing, like it's not a necessity to be apt at coding from scratch in the set of AI with GPT and all. Obviously, don't need that. But yeah, you must understand those concepts and obviously build projects that will help in the long way. Okay. Yeah. So, Ms. Fuali, how did you approach this? Yeah, like not much more different than what Harsh and Aditya said.
But yeah, like to add on with that, yeah, focus on the ML projects which you have mentioned in your CV, or if you're trying to build, make those ML projects more towards application based, as those are much more appreciated in the interview. And whatever models and you are writing in your particular CV or you are using, you should at least have a basic algorithm cleared for that. You should be prepared for those models at least. And yeah, apart from that, they don't ask entire model or libraries from scratch. So yeah. Yeah, that was very informative. Thank you so much. As a follow-up question to this, as all of you said that about the libraries, different types of libraries a candidate must know before giving an interview. So could you please elaborate what are the basic level of knowing about that libraries? Okay, so uh, starting of the like the machine learning journey is basically तुमको data visualization पता होना चाहिए, डेटा क्लीनिंग थिंग्स एंड डेटा को कैसे वगैरह क्लीन करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स यही होती है जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज लाइक द नम्पाई पांडास मैटप्लॉट, जिससे तुम सारे एनालिटिक्स पार्ट डन कर लो. आफ्टर दैट देयर इज टू प्रिडिक्ट द मॉडल्स कि अब उस डेटा जो तुमने प्रिपेयर किया उससे हम मॉडल्स को कैसे प्रिडिक्शन रहे, हमको कैसे आउटपुट मिले. देन डिफरेंट लाइब्रेरीज फॉर द एल्गोरिथम्स पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल्स. तो तुम्हारे पास जैसे साइकिट लर्न है, उसके बाद तुम्हारे पास साइकिट लर्न के अंदर काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स है. तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सा मॉडल. मॉडल इज लाइक द ऐसे लीनियर रिग्रेशन, द डिसीजन ट्रीज, द रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे मॉडल्स की एल्गोरिदम्स कैसे चलते हैं, तो दीज कैसे इन लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट करें. और बस ये बेसिक की प्रैक्टिकल कोडिंग होनी चाहिए. एंड देन द डीप लर्निंग पार्ट केम्स कि अब तुमने ऐसे मशीन लर्निंग का सारा पार्ट डन कर लिया, द सुपरवाइज्ड वन एंड द अनसुपरवाइज्ड वन, एंड नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डीप लर्निंग. तो देन न्यूरल नेटवर्क पे, तो अब न्यूरल नेटवर्क की सारी सारी लाइब्रेरीज एंड द एल्गोरिदम्स उनको पता होनी चाहिए. काइंड ऑफ ऐसे ऐसे वे में पाथ चलता जाएगा. Any other panelists want to add something? Yeah, I think it was exactly what is to be needed. Also, one more thing that about the libraries, that don't just go and learn the theories and all everything. Like the best way of getting hands at those is that dive into a competition or dive into a hackathon or a project Yeah. and try to just learn by applying them. Because in like even if you're unaware of, let's say, you've never worked with transformers and you just know the basics of deep learning, still I would say maybe go into a project where you build something using those. You go into the library documentations, you go through YouTube videos. In those ways, that's a much better way of learning these stuff rather than just going through Coursera courses and memorizing everything. Yeah, it's better to go with the application way instead of going and learning all the algorithms and the path. So it's better you apply them and learn. Make different, try on different projects from Kaggle or work on different data sets with the same particular model, and you'll understand how that model works on different data sets. So I think application-based approach is much more better, and that will help you more. Thank you for the information. Let's proceed to the next topic. What resources did you use to strengthen your knowledge in areas like data cleaning, exploratory data analysis, and data visualization? Okay. So in my first year सबसे पहले मैंने तो जो मैथमेटिक्स और बेसिक मशीन लर्निंग है एंड्रयू एनजी का कोर्स किया था फ्रॉम कोर्सेरा. There are 3 modules present of N2NG, and I think these are the best, in my opinion, best resources to learn something about machine learning. And then there is a full playlist of Campus X, the 100 days of machine learning and 100 days of deep learning. And तो वो भी काफ़ी इंट्यूटिव वे में समझाता है एंड सारी टॉपिक्स अलॉन्ग विद द कोड कवर करता है. For the CDC part, I mostly rely on the 100 days of machine learning, deep learning, and hands-on deep learning. एक बुक आती है ओरेली की, तो काफ़ी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं बुक के पीछे. देन द इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया. एंड फॉर Kaggle notebooks, for the practice part, so data analytics part, the pre-processing and the visualization part, तो वो तुम सारा Kaggle notebook से ही सीखेगा. डोंट मग अप द थिंग्स लाइक एक लाइब्रेरी कैसे चलती है, पांडास की सारी चीज़ें रट ली, देन
तुम नंपाई की सारी चीज़ें तुमने सारे फॉर्मूलेज याद कर दिए, नहीं चलेगा ऐसे। तुम एक कैगल नोटबुक ले लो, उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, देन स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें सीखते जाओ, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी एंड तुम उसमें काफ़ी ईजी वे में आगे पुल ऑफ कर लो। दैट्स माय साइड कि मैंने तो यही चीज़ें करी थी। Is there anyone else who? Yeah, I think it's the same almost. For the maths part, obviously, I think, yeah, if in the KGB itself you have those courses of PNS and linear algebra, those are mostly sufficient. But if you still want a revision, you can actually go through, I think, Stats One Mono course by Stanford. That's a pretty good Yes, course to actually revise of everything related to statistics. After that, to learn if once you dive into machine learning, then there are the courses of, as you said, of Coursera and Andrew NG and Campus X. Besides that, if you are confident in maths, I think you could also explore the which was it? I think CS 229 course. I think it's by Stanford. It's a Yes. bit theoretical, but yeah, it's actually very good. Like it actually helped me to understand even simple models like linear regression from the deep fundamentals. So I would recommend that. But if you actually face problems in that, skip it. Like it's not a compulsory thing. And after it, yeah, if you want to explore any particular niche domain like RL or let's say diffusion models or anything, then yeah, there are particular resources for that. Uh, Mostly you'll get those on Coursera or by Stanford courses. But yeah, if you want anything specific, you can maybe reach out afterwards. Yeah, pretty much similar only. Thank you for your Thank insights. you so much. Okay, so here's the next upcoming query. What kind of projects add strong value to a CV for data roles? Do recruiters prefer end-to-end machine learning projects, dashboards, or projects that show that you can code what you have learned from scratch? That is LSTM's transformer architecture. ओके। सो लाइक एसडीसीवी के लिए प्रोजेक्ट्स इतने मैटर नहीं करते, वो मोस्टली तुम्हारी डीएसए स्किल्स पे तुम्हें इंटरव्यू में जज करेंगे। बट फॉर द डीएसए, फॉर द डेटा पार्ट, तुमको मोस्टली तुम्हारी सीवी में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि शॉर्टलिस्ट काफ़ी उस बेसिस पे आती है। तो अब तुम एक सिनेरियो समझो कि कोई भी कंपनी आती है, वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आती है। तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में वो ऐसे एज्यूम करती है कि हमको इसी टाइप का पर्सन चाहिए जो मेरी कंपनी में आके ये काम करे। एंड देयर आर मैनी ट्रेंडी थिंग्स विच आर करेंटली गोइंग ऑन डेटा पार्ट में, लाइक द कोई आजकल काफ़ी लोग चैटबॉट बनवा रहे हैं, वो काफ़ी लोग रैग आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, कुछ एजेंटिक सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि तुमको पूरी पूरी चीज़ें पता हो, दे जस्ट वांट कि तुमको छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो भी उसमें चीज़ में होते हैं ना, वो तुम्हें इंडिविजुअली बहुत कंसेप्चुअली तुम्हारे स्ट्रॉन्ग। तो इफ़ तुम ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स अपने सीवी में डालोगे, तो वो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि तुम्हारी शॉर्टलिस्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड या दैट्स ऑल कि थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक, लाइक अब तुमको डेटा में सोचना है तो तुम प्रोजेक्ट्स लाइक कि तुम रैग का कम से कम एक प्रोजेक्ट तो डालो, नॉट जस्ट सिंपल रैग। रैग इज लाइक कि काफ़ी सारे रैग के आर्किटेक्चर आती है, द हाई रैग, द ग्राफ रैग, एंड काफ़ी सारे एक्सप्लोर कर सकते हो तुम। बस तुम्हें बेसिक रैग आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, देन तुम उसमें कोई भी ट्वीक ट्वीक करके अपनी प्रोजेक्ट्स बढ़िया से बना लो। अदर थिंग इफ Yeah, तुम कुछ एजेंटिक थिंग में बना लो। यस यस यस। no, continue. ओके, अदर थिंग इज कि तुम लाइक कुछ एजेंटिक सिस्टम्स पे बना रहे हो, तो देर इज यू नो कि सबको पता है कि एक एलएलएम होता है जो कि सारी चीज़ें ऐसे बाकी सारे आउटपुट्स देता है। तो उसके कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट पे काम कर लो, लाइक द मेमोरी लेयर, द टूल्स एग्जीक्यूशन पार्ट, अदरवाइज द प्लानिंग पार्ट, दीज आर द थिंग्स। और एक पर्टिकुलर मॉडल पूरा मशीन लर्निंग पे बनाओ, फ्रॉम द डेटा प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग टू प्रिडिक्शन थिंग। एंड तुमने ये प्रिडिक्शन क्यों किया, ये वाला मॉडल क्यों लिया, वाई यू चूज ऑन सैम्पल लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें करके एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो काफ़ी बेटर रहता है सीधी। Yeah, like agreed with him, but try having more end-to-end projects which add like even if you're using a RAG architecture, it shouldn't be a very basic structure that you created a chat GPT or something. It should try making a project which actually solves a problem out in the world. Because making a chatbot is pretty much basic right now in the field.
in the industry. So try making projects like you have created a, let's say, I created a entire image designing thing. You can create like different tools which you can be used using that chatbot instead of just giving answers and creating images. Try building and solving few problems out in the world. Try create. You can take any industry, not related just to chatbot. You can go for civil engineering. You will find different topics there as well. In biotech, you will find different topics like cancer images. Try making end-to-end projects that will help you more if you put models on them. Because like if you go for cancer images and try finding the diagnosis of that, that is actually solving a problem. So the interviewers are much more appreciating towards those projects. Yeah, actually, I would Thank agree on that because in currently, if you see most of the competitions and hackathons, they also have problem statements where you need to build this end-to-end AI agentic systems, and so seeing the trend, I think mostly in the upcoming CDC also, CDC also, companies would be requiring that you actually know those skills. It's not like you have to build them on your entirely own. You can team up with your friends and do a complete project because sometimes it also requires some HD skills where you have to manage a MCP server and those things. But yeah, I think those type of projects would actually be beneficial for your CV. And also, if you put up any project, I would say just don't exaggerate. Like if you have put up something, just know why you did it and what are the other things which you could have tried but did not do. If you don't know like let's say transformers and you just put a project on that, just don't do that because that would be self-harmful. If you like even put up a basic project of machine learning and it was maybe doing simple prediction using XGBoost also, then at least know that why did you use XGBoost and not simple random forest? What was the reason? Know the basics. Okay, that's a really helpful way to look at it. Thank you. Moving forward, what is the one point in your CV that made sure you stood out in a comparison to others during the CDC process? Could you each briefly describe one or two key projects or experiences that you personally highlighted in your applications? Okay, so लाइक सीवी के अंदर है ना एक हायरार्की होती है कि तुम्हारे सीवी में चीज़ें मैटर क्या करती है सबसे ज़्यादा। तो मैंने भी जितने सीनियर से बात करी थी अपने, तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि इंटर्न इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन तुम्हारी जो भी हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन, देन ग्रेटर देन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। तो इंटर्न की वैल्यू सबसे ज़्यादा सीवी में सबसे ज़्यादा होगी, देन तुम्हारे हैकाथॉन कॉम्पिटिशन एंड देन द प्रोजेक्ट्स। तो इन माय सीवी आई थिंक मेरे पास काफ़ी एक अच्छी इंटर्न थी जो कि स्टार्टअप में काम किया था। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें साथ में सीखी भी थी एंड इम्प्लीमेंट भी करी थी। सो आई थिंक दैट्स अ वर्क जो इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आया। देन देयर इज़ ऑल्सो मेरे सीवी में हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा थे। तो हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन लाइक मेरे पास इंटर आईटी का एक कॉम्पिटिशन 13.0 का, सो वो मैंने डाला था एंड वो काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। एंड अदर थिंग में एक उधर स्पेसिफिक कंपनी के लिए चीज़ चाहिए थी, वैसा वाला प्रोजेक्ट मेरे पास था। दैट इन Uh, What yeah. So like what he said for the hierarchy is very true. For me as well, I had a data analyst internship in Wipro, which actually gave me the most impact in the CV. And I had few research internships, one from IIT Bombay, which I did with a professor from civil engineering, totally in data. And one I did with the research internship at IIT Delhi. So both of them were pretty much in depth with the data. I started with data processing to EDA to visualizing. Basically, it was a proper ML project, which helped me a lot. And obviously, the internship helps you. So I had an internship at Wipro for data analyst. Yeah, I think for my case, I was a bit different because I didn't have any, competitions or hackathons, or maybe even internships at a startup. Because what I usually see the problem with most of people is that at the end of the second year, also it's a bit difficult to get an internship in data field.
So, but there's no worries because actually research interns are the best thing I assume. And it's maybe it can get a bit difficult to get them, but yeah, you can reach out to your seniors, do cold mailing, or even grab the FTPs given by, I think, ISL. Those are quite good. Like in my case, I had one at IIM Ranchi and one more at it was at Deakin through FTP. So especially the project at the Deakin one was quite helpful for me, which made it stand out because the project topic was actually quite good and it was a bit trending one. It was, I think, against preventing adversarial attacks of LLMs. So yeah, maybe it's not like you have to have include everything. Just one or two good projects are sufficient to make you stand out. Thank you for the answers. A follow-up question about it is, what do the interviewers want currently? Basically, something that portrays the basic of machine learning models work or end-to-end concept projects. मोस्टली इट्स कि वो एंड टू एंड ही चाहेंगे, बट एंड टू एंड के अंदर भी तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स बताओ, तुम क्लियर हो कि तुमने ये चीज़ क्यों करी। फॉर एग्जांपल, तुमने एक मशीन लर्निंग का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें तुमने पूरा डेटा एनालिसिस से लेके लास्ट में डेटा प्रिडिक्शन तक पार्ट किया। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे कि तुमने ये सब क्यों किया। अब वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि जो तुमने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ किया, ये वाला क्यों यूज़ किया, तुमने ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया, तुमने ये मॉडल यूज़ किया तो तुमने इसको ऑनसैम्पल करके 3-4 मॉडल्स के साथ रिजल्ट क्यों नहीं निकाले। वो यही चाहते कि तुमने जो भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया, तुमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए या तुमने डायरेक्टली कहीं से ये चीज़ देखी कि ये होता है एंड ये पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। सेम थिंग। Yeah, like Right. you should have the thorough idea ki you have made this project and why you have made this project, why you have chosen such models, why these particular metrics you have used to find the performance of it. Like it should not be like you had a particular data set and you just know that this particular model is used in on this data set and you used it. There should be a basic experimental thing. Your analysis should be there that this data set, why this particular model is used on this, and this particular data set is in a way that it should be cleaned this way, it should be visualized this way. You should be very clear about the projects you have put in the CV. Yeah, I think that sums up everything. Thank you for the responses. I think you're muted. Sorry. आई So yeah, थिंक आई वांट टू ऐड समथिंग, लाइक कोई yeah, भी sure. यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में हैं जो अभी अपनी सीडीसी के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना या अभी कोई भी प्रोजेक्ट डालोगे, तो उसमें एक तो खासकर वैसे ही प्रोजेक्ट डालना जिसमें काफ़ी नंबर्स हो, जो कि तुम एक्सप्लेनेबल हो, बहुत सारे तुम एक्सप्लेन कर सको, और यही सोच के डालना कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू तुमसे कितने सवाल पूछ सकता है। इससे जितने ज़्यादा सवाल वो तुमसे पूछ सकता है ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हारा प्रोजेक्ट उतना गुड है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज उसको समझ ही नहीं आएगा इसने बनाया क्या है, या उसके ऊपर से चला जाएगा, बट वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। बट क्योंकि अगर तुम उसको ज़्यादा ऑप्शन दोगे ना कि तुम मेरे से क्वेश्चंस पूछ, तो उसको भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी पूरी कॉन्सेप्ट नॉलेज के बारे में पता चलेगा। ट्राई करना कि ऐसे ही टाइप के प्रोजेक्ट्स डालना और बनाना। Thank you for the insights. Yeah. So now, diving into the major doubt, how much DSA is required for a data profile? Like, until what topic does one have to well verse with? That is, dynamic programming, strings, etc. ओके, फॉर द डीएसए आई इट्स लाइक कि तुमको सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए, नॉट वेरी डीप। तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स बताना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग एसक्यूएल टू लास्ट लाइक डीपी थिंग्स। स्ट्रिंग्स थिंग्स आर एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट वेरी मच इन द इंटर्न सिलेबस। स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं पूछते, द सेगमेंट ट्रीज भी इतना क्वेश्चंस नहीं आते, बट तुमको वैसे डीपी, ग्राफ्स, देन एसक्यूएल, बाइनरी सर्च, ऑल द टॉपिक जितने भी डीएसए में तुम यूजुअली हम पढ़ते हैं ना, या स्ट्राइवर शीट में जितने भी है, एल्गोजेनिक में जितने भी है, वो तुम्हें पता होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट वाइज। देन रेस्ट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस कि तुम कितने लेवल तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तुम आई थिंक फॉर द
डेटा के लिए तुम मीडियम लेवल तक ही करो, ज़्यादा हार्ड लेवल की साइड मत जाओ, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टाइम लेंगे एंड देन वो एसडी के लिए प्रॉपर हो जाएगी तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन है। तो मीडियम तक तुम कर सकते हो, बट तुम्हें मीडियम तक और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए फॉर डेटा के लिए। Yeah, I think I agree in that. For if you're preparing for data specific DSA, it's not like you have to cover everything, but it depends on the level of difficulty you go to. You don't like it's not like you have to cover the entire nick of CSES and CP and all. Like if you do till maybe lead code medium, and also you at then you can go to the standard DSA questions and interview bit and all. I think that would be more than sufficient for at least data specific roles, because in my opinion, the questions which had been asked in OAs and interviews were actually most interviews do not even ask DSA in the data interviews. But like even if they asked, they were quite basic ones, which would not require you to, know some hefty algorithms in CP. Yeah, like the topics are very basic for DSA when it comes to data rules, like array, strings, hashing, sorting. You don't need to go till the graph level. I have not seen that they ask graphs question and as such in the interviews. But yeah, dynamic programming is something which is important. And at least have the basic knowledge for every topic out there. But yeah, till that DP and all and basic algorithms like binary search and all is enough. You don't need to go for the entire competitive programming level DSA. You don't need that. You just need at least mid level questions is enough. Okay. Moving on to the next topic. Can you walk us through the selection process for your data internship? ओके, सो फॉर द AWL सबसे पहले एक असेसमेंट टेस्ट हुआ था, आई थिंक सबके लिए सबने दिया था। वो वही टेस्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 और 3 सेक्शंस थे, जिसमें के अंदर पहले अंदर MCQ पार्ट, एंड MCQ में मोस्टली डेटा के कॉन्सेप्ट ही थे कि ओवरफिटिंग वर्सेस अंडरफिटिंग में डिफरेंस क्या है, बेसिक बेसिक डेटा क्वेश्चंस। देन आई थिंक देयर इज अनदर राउंड जिसमें टू दो DSA के क्वेश्चन थे, एंड दे आर वेरी इजी टू मीडियम लेवल, not that very much difficult. And third round is just like कि if you want just some HR type questions, हमें अपने राइट करने थे कि अगर तुमको AWL में ले लेते हैं तो क्या तुम कौन से रोल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड थिंग्स वगैरह। So that's the OA test. And then in the day 2 पर आई थी AWL, and उन्होंने शॉर्टलिस्ट निकाली थी, एंड मोस्टली पीपल आर CV शॉर्टलिस्टेड, नॉट OA शॉर्टलिस्ट, क्योंकि OA में मोस्टली सभी का अच्छा ही गया था। तो CV शॉर्टलिस्ट के बेसिस पे 8 to 9 पीपल उन्होंने लिए थे फॉर द डे 2 इंटरव्यूज, एंड देन एक्सटेंडेड शॉर्टलिस्ट निकली थी जिसमें भी 8 to 9 पीपल। एंड फॉर द इंटरव्यू पार्ट एक ही राउंड होता है AWL के लिए, एंड CV ग्रिल, पूरा एक ही राउंड, पूरा CV ग्रिल, जिसमें तुम्हारी पूरी CV ग्रिल करी जाती है, तुम्हारे वेरियस प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी क्या इंटर्न तुमने करी है, एंड वो इनिशियली खुद से ही बोल रहे थे कि तुम अपने बेस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट्स हमको एक्सप्लेन करो, और वो मैंने बताए थे। देन उनके क्वेश्चंस आए थे फॉलो अप में, एंड देन वो उसी को लेकर पूरी CV ग्रिल कर रहे हैं। दैट्स माय इंटरव्यू प्रोसीजर फॉर द AWL। What was the question? Anyone Could you else? repeat? Yeah, sure. Like, can you just walk us through the selection process for your data internship? Like, what all Oh, things happen? yeah, sure. So, I think OAs में in at the OA part Adobe, I think they had 2 questions of DSA, which were again lead code medium, not quite difficult, and there were questions on machine learning and all. But again, those were was from some fundamental concepts. It just those questions just test your speed, how fast you can solve basic questions. Those were mostly mathematical and basic machine learning stuff. Uh, Mostly, the selection depends majorly on your CG and department, I would say, like to be very honest, because always sabhi अच्छे कर लेते हैं and it doesn't have a good, the companies itself, they don't have sufficient criteria to rule out students. So yeah, after the OAP part, I think in the interviews, it was like in they had asked mainly questions on mathematics and a bit of CV grilling. Like
In my case, they did not even jump to DSA or some other stuff. So yeah, if you want to specifically go into research roles, I would say having a strong hold at mathematics would be beneficial actually. And yeah, that's it. Yeah, like for my internship, even for the OA, there was a resume shortlisting. Not everybody could participate in the online assessment directly. The OA had two DSA questions and aptitude and analytical problem solving questions as such. For the interview, I had two rounds of interview. One was technical and the other was cultural. In the culture, they basically asked about what do you know about Amex and how does it work and all. For the technical round, they focused on projects, ML fundamentals, prob and stats, few puzzles, and SQL at most. So yeah, it was a round of 1 hour, 15 minutes interview, the technical round. So they go very thorough when it comes to the fundamentals of ML. Okay, thank you so much. Now, looking at the final stretch, interviews can be tricky. How did you communicate your data skills effectively during the technical interviews? Any tips on explaining models, showcasing projects, or interpreting data? ओके, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि जो मेरा राउंड 1 हुआ था, तो वो जैसे सीवी ग्रिलिंग कर रहे थे एंड वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो स्टार्टिंग इनिशियली मैंने बताया था प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हें कहता है तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, तो तुम्हारे पास कम से कम 8 टू 10 लाइन्स और 10 टू 12 लाइन्स पूरी रेडी होनी चाहिए, तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करे। नॉट जस्ट कि प्रोजेक्ट करता क्या है, द टेक्निकल आर्किटेक्चर थिंग कि क्या आर्किटेक्चर तुमने बनाया, कैसे वो काम करता है, कैसी चीज़ें चलती है उसके अंदर। ऑल्सो तुम्हें खुद से बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि तुमने ये चीज़ ही क्यों करी। आई नो कि कुछ इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वाई शुड यू चूज दिस पर्टिकुलर मॉडल, बट कुछ नहीं पूछेंगे तो तुम्हें खुद से बताना पड़ेगा। तो स्पेशली मैंने बताया था कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेजनेट और एफिशिएंट नेट मैंने दो मॉडल्स को यूज़ नहीं किया था, क्यों नहीं किया था और ये वाला मॉडल क्यों यूज़ किया था, तो ये मैंने स्पेसिफिकली उनको बताया। तो ऐसे तुम्हारे इंप्रेशन बनेगा इंटरव्यू में कि तुम उनके सामने अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओगे। तो खुद से काइंड ऑफ क्वेश्चंस पहले से बना के जाओ अपने प्रोजेक्ट को लेके कि मेरे को कम से कम ये चीज़ें तो बतानी है, जिससे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह थ्रूली तुम्हारा इंटरव्यू जान पाए। Yeah, I think the main thing is just get comfortable with the interviewer because see, interviews you don't have that much time that you can explain your entire project end to end. So you just have a few minutes, and the interviewer does not know anything about that. So like अगर तुम्हें हिंदी में बोलना तो उन्हें हिंदी में समझा दो. It does not matter a lot, but try to and don't throw just technical jargons at them. Ki I optimize this, enhance this. There's no need of that stuff. Just stick to your fundamentals, exactly what you did, what was the reason, what was the methodology, what were the end results, and what are the future works you could have done maybe in that project. That also important thing. And then afterwards that the interviewer can jump into that and he can ask more deeper questions and how you did that or what is that. Like he can even ask you basic theories. Like for example, in my case, when I was explaining the agentic AI project of defending jailbreaks and LLMs, the first question of the interview was just explain me what's an agent. So it can be as simple as that, but you just need to stay calm and be sure that you know the answers and explain to them in basic terms. Yeah. Yeah, like I agree with both of them. You just need to be very much prepared about your projects. Like Harsh said, you should have a basic of 10 to 12 lines prepared for every project. Because for me also, they asked that choose any of the projects you have and give me an overview about it. So when we say overview, you just don't have to tell the objective. It should be a complete answer to that question. And keep the path like explaining the objective and what was the end goal for you for the objective or the problem you had and what models you used and what challenges you faced. This is the basic overview you should give in the first glance. After that the follow-up questions comes and like he said, like both of them said, the questions are can be as basic as it can be and it can be as deep as well.
So be prepared. Thank you for the answers. Another Also, I follow-up want to question. add something. Yeah, sure. I want to add. तो कोई भी जैसे भी इंटरव्यू तुमसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो तुम डायरेक्टली उसका रिप्लाई कुछ भी ऐसे ब्लंटली मत दो. देयर इज ए डिफरेंट फ्रेमवर्क जो बने हुए हैं इंटरव्यू को के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. तो ये मैं भी सीख कर गया था. देयर इज ए स्टार फ्रेमवर्क, बहुत फेमस है, तुमने भी सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा. तो स्टार इज लाइक देयर इज ए सिचुएशन, then it goes to task, then action and the results. तो सबसे पहले जो भी इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले तुम उसी सिचुएशन को समझो, देन उससे एक टास्क लिस्ट बनाओ कि क्या क्या वो पूछना चाह रहे हैं ढंग से, एंड देन उस पर्टिकुलर सब टास्क पे तुम एक एक एक्शंस लो. लाइक क्या इस टास्क का क्या आंसर होगा, इस टास्क का क्या आंसर होगा, देन वो जो भी तुमने एक्शंस निभाए उससे क्या रिजल्ट तुमको मिल सकता है. तो एक ये प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो आई थिंक हर क्वेश्चन में तुम फॉलो करोगे तो काफ़ी वो भी इम्प्रेस होगा कि हाँ ये ऐसे ब्लंटली आंसर नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, या तुमने काफ़ी अलग ही चीज़ें बोलनी शुरू कर दी. तो एक चीज़ पे स्टिक रहना एंड देन आंसर करना. That's quite important. And one more thing I'll add that if even if you do not understand the question or you don't have a basic idea also, just ask back the interviewer that what do you exactly mean by that, or could you please clarify? It will actually help you answering that. So yeah, I think the framework goes well. Uh, Thank you for the insights. Now, another follow-up question is that could you please tell what is the duration of your own personal interviews? I think mine was, it's only one round, so it's 45 to 50 minutes. Yeah, They I think same start for with me. कि तुम बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि पहले तो इंटरव्यू होता है, द बेसिक इंट्रो तुम सब बना के जाओगे, एंड देन वो तुमसे प्रोजेक्ट्स पूछेंगे, देन उस प्रोजेक्ट्स पर अच्छी तरह डिस्कशन होता है, एंड देन वो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि मेरी एक इंटर्न में मोंगो डीबी लिखा हुआ था, तो एक इंटरव्यू को दिखा कि इसने मोंगो डीबी लिखा है, तो उसने ऐसे रैंडम सवाल बनाया कि मोंगो डीबी एसक्यूएल है या नो एसक्यूएल है. इट्स नॉट रेलिवेंट कि मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया मोंगो डीबी के बारे में, ना मेरी कुछ बात हुई थी, बट अगर तुम्हारी वो सीवी में कुछ भी लिखा है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हो उसके बारे में. तो वो ध्यान रखना कि कुछ भी ब्लंटली भी मत लिख देना सीवी में, पता होनी चाहिए सारी चीज़ें. तो आई थिंक 45 to 50 मिनट्स के अराउंड करें. Yeah, I think in my case also there was just one round, and it was on the same length, 30 to 40 minutes. They started off with, as I said, basic questions of mathematics, linear algebra, and all. And afterwards, he just dived in my CV and was mainly questioning on the projects. And the HR round was included in that itself, the last 5 minutes maybe. Yeah. Yeah, for me, I had 2 rounds of interview. So the first round was technical. So they covered a lot of topics. Like as I already said, they started with the CV and eventually the projects, and then they move on to the fundamentals of ML. Why fundamentals of ML? Not necessarily that you have put it on your CV, but very basic questions like what is overfitting and underfitting, what do you know by bias, and all these kind of questions. And then they moved on to probability and statistics. There is a book for this, Heard on the Street, I guess. The name of the book is this. It has some puzzles and questions on prob and stats. I prepared from that. So they asked questions. By luckily, the questions they asked was from the book only. So that helped me a lot. Apart from that, very basic of SQL and Python, because what your role would be mostly data analytics, as SQL is one of the most needed skill which you need. Uh, this came around 1 hour to 15 minutes. 1 hour 15 minutes. My interview went first round, and the second round, as I said, it was cultural, so it took around 10 to 20 minutes. That's it. Yeah. For the probability thing, you could also refer, like if you want a quick revision, you could also refer to the, I think, KDAG as a handbook for that. I think it's quite self-sufficient, and if you once even go through it, it is enough for at least data, and I, I would say even basic quantitative also. So yeah, you could go through it. Thank you for the information.
Yeah, so up to this point, our discussion has leaned heavily towards immediate CTC preparation. But however, we have a significant number of attendees in the crowd who have just completed their first year and are eager to dip their toes into data profiles. So moving ahead, for a person who is able to do basic coding in Python, can you describe a brief roadmap for them? This could include what libraries to learn or what courses to do and some beginner friendly projects. ओके सो मतलब किसी को भी पाइथन और बेसिक कोडिंग की नॉलेज है ना, स्टार्ट लर्निंग सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के। तो जैसे हम तीनों ने बताया कि तुम जो बेसिक बेसिक रिसोर्सेज है, लाइक तुम कैंपस एक्स कर सकते हो, एंड्रयू एन जी का कोर्स ले सकते हो, तो कम से कम ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले तुम्हें पता चल जाए कि क्या क्या एल्गोरिदम्स है मशीन लर्निंग में जो हम कवर करना चाहते हैं। देन एक बार वो तुमने सब कुछ सीख लिया, तुम कैगल नोटबुक्स पे स्विच हो जाओ, तुम वहाँ पे एक थ्रोली प्रैक्टिस करो, एक दो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कैगल पे तुम्हें अच्छे खासे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे और डेटा सेट्स प्रोवाइड करता ही है, तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू कैन गो डीपर, तुम आगे के टॉपिक्स फर्दर उसके बाद पढ़ने शुरू कर सकते हो। अभी स्टार्ट विद फंडामेंटल्स फर्स्ट, कि तुम्हें सारी एल्गोरिदम्स तो कवर करो। Yeah, you can go first. Anyone else would like to add something? Yeah, like if you have started with Python, I think blindly diving into machine learning before that, you should try with different options as well as I say SD and all. Go and explore a little bit. Don't give it much time to that because you won't know when the time goes up. So explore a little and then go to machine learning only because machine learning is a very deep and in depth field to go in. And if you don't have interest in it, you won't be able to grow as much as you think. So before that, I would say is explore it. But if you are actually interested in machine learning only, as Harsh said, you can go with the ML project, ML lectures from Campus X or EnroNG on Coursera, whatever you feel more suitable to that. As well as with this, I think there is a lecture of Stanford for machine learning and deep learning. You can start with that as well. That is a good one, but for Stanford one, I would say before that there would be a prerequisite of mathematics for like probability and statistics and linear algebra. So try completing that before you go directly into the machine learning part. Yeah, I think I would agree on that because I've seen most people, they do machine learning for the entire second year. They are saying they are doing the machine learning course of Andrew and C. But when it comes to the summers, when you prepare for CDC, they think that it is too overwhelming. You need to switch to front end, back end, like the SD part. So I think you should at first give a bit of time exploring this domain. And are you really into it? If you feel that yeah, this will keep you interested in the long run, then it's fine. Then you can jump to the courses and stuff. Thank you for the information. Moving forward, in the final days leading to your interview, what topics or concepts did you revise? Is the PNS course sufficient or some other resources are to be completed? इन द फाइनल डेज तो मोस्टली डीएसए सॉल्विंग ही चल रही थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डीएसए के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहो। फॉर द डेटा पार्ट तो थियोरटिकल रिवीजन में कर रहा था साथ बाय साथ, कि डीएल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहा था। ऑल्सो वही जो मैंने बताया था कि हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक आती है, तो उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा था कि क्या क्या इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। सीवी ग्राइंडिंग इज ऑल्सो देयर, सीवी के प्रोजेक्ट को ढंग से पढ़ रहा था, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। What was the another question you said? The second part? Is the probability and statistic course sufficient or some other resources? I think it's sufficient. Probe stats maybe वो I think interview basic things ही पूछते हैं and तुमको अगर puzzles type करने हैं तो puzzles के अलग resources है जो तुम कर सकते हो। There is a green book जो तुम कर सकते हो। JPMC खासकर बहुत
पजल्स टाइप क्वेश्चन पूछती है। उन्होंने कम से कम मेरे से 2 राउंड में उन्होंने पजल्स के पूछे थे, तो ब्रेन स्टेलर और ग्रीन बुक के एग्जैक्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट के दिनों में, तो खासकर इंटरव्यू से पहले। ऑल्सो तो स्टैट्स 101 अगर तुमने करा हुआ है, या तुमने जो भी पीएनएस के कोर्सेज तुमने अपने केजीपी में की हो या प्रोफ से, आई थिंक वो सफिशिएंट है। उसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। इन माय ओपिनियन दैट्स सफिशिएंट। Yeah, I think Yeah, I same. also agree. Yeah, I also agree that Okay. yeah, PNS ka course is more than sufficient. If you must have made notes and you have NPTEL lectures for that, I think that is more than sufficient for that. Other than that, you don't need to do more PNS. Uh, and for puzzles, here, as he said, Brainsteller, and there is a book, Hard on Street, and the Growing Book. All of them are sufficient. Any one of them you can do. Not necessarily you have to go through all of them. Yeah. So just before the interviews, once you can revise your projects in detail, like what were the basic concepts, what are the algorithms, so that you don't miss any minute detail. That should be sufficient. Thank you for all the responses. Yeah, so moving forward, do you guys have any last minute tips for the people sitting for CDC this year? For the tips, I think it's basically know your CV thoroughly, be able to explain every project, internship, and achievement, and whatever you have mentioned in the CV. Um, yeah, focus on concepts over memorization. Don't just mug them up. Try understanding whatever you have used, because there obviously will be follow-up questions. The questions won't be very straightforward. And practice communicating yourself throughout the process, because it's like some for me the interviewer can find any kind of interviewer. The interviewer can be easygoing, can be very friendly. Sometimes they are very intimidating, so you should know how to be calm in every kind of part on in the interview. So yeah, be prepared in that way. Apart from that, all the best and keep preparing. Thank you. That was really insightful. Yeah, from my side, I think I would say, like, I think we have covered almost everything related to machine learning and stuff. One thing which I think people miss during CDC is that at times it can better feel overwhelming. It can be tough because when you sit in CDC with a lot of your batchmates and all, it feels like you are missing behind on something, or some of your batches वो लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं तुम वो नहीं कर रहे. I would say like उतना stress मत लो. It's just CDC. Take help from my batchmates, take help from my friends. Reach out to your seniors. I think that's the main stuff. Like मेरे टाइम में I used to कुछ भी होता दिमाग में I used to directly message them कि ये डाउट है ये बता दो, CV रिव्यू करनी है कर दो, ये प्रोजेक्ट डालो या फिर नहीं डालो. Like disturb them. It doesn't matter. It's for your own benefit because at the end, CD is just a process you need to go through, man. Surely, if you work hard truly, you'll get there. All the best. Yeah, I think it's mostly same. अपनी सीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो. लास्ट मिनट सीवी ग्राइंडिंग मत करना. मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं. इंटरव्यू आ गया है, एक रात पहले उसी टाइम बैठे अपनी सीवी को पढ़ने के लिए. थोड़ा पहले से तैयार करके चलना. एंड इफ़ तुम्हें कुछ नहीं पता इंटरव्यू, जैसे कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन तुम्हें उसने बोला एंड तुम्हें नहीं पता, तो उसको ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करके मत बताना उसको, क्योंकि अगर उसने फॉलो अप कर लिया तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसको ब्लंटली बोल दो कि इतनी मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं, एसडी में तो स्पेशली पूछते हैं कि क्या तुमको कोर सीएस के कॉन्सेप्ट्स पता है, कि तुमको डेटाबेस नेटवर्किंग थिंग्स सीएस डीबीएमएस वगैरह सब पता है. तो हमारी कोर्सेज में नहीं होते, जो बाकी नॉन सर्किटल एंड काफ़ी सारे सर्किटल में भी नहीं होते. तो लोग ब्लंटली बोल देते हैं इंटरव्यू को कि हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो हमने इसलिए प्रिपेयर नहीं किया. तो इट्स ओके. एंड वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुमको पता हो. मतलब कि ज़्यादा एक्सजरेट मत करना इंटरव्यू में, एंड झूठ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कम ही बोलना, ज़्यादा ही है. अच्छा, बाकी तो इट्स ऑल द सेम एज सुहानी एंड
All the best. Thank you so much. Last but not last but not the least question. How many roles in the data actually came in the campus? I think role तो जो cover करते हैं data analytics, but AI engineer type, there is some ML engineer type roles. So और I कौन से think आते हैं? सुहानी Gen AI roles R आती and है D और फिर या Gen AI uh, roles. मेरी रिसर्च रोल है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Yeah, आई डोंट आई थिंक मतलब लोगों को काफ़ी ऐसा लगता है कि डेटा के रोल्स बहुत कम आते हैं। ऐसी बात नहीं है। आजकल आई थिंक पिछले साल तो बहुत कंपनीज आई है डेटा की। नॉट सेइंग कि इन द फर्स्ट एक ही महीने की बात कर रहा हूँ। आगे जितने भी 3-4 महीने जो सीडीसी प्रोसेस चलता है, काफ़ी सारी कंपनीज आती है डेटा की। काफ़ी लोगों को वो लेकर जाती है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ एसडी वाले ही प्रोफाइल्स आती है सिर्फ। yeah. Right now, या most of the companies have a uh, profile for data as well as with SD. Thank you for the responses. This brings our panel discussion to an end. Finally, can you share your pearls of wisdom regarding the importance of taking part in Open IIT, Inter IIT, and GC data? ओके, सो आई स्टार्ट विद इंटर आईटी। मतलब इंटर आईटी इफ किसी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एक महीना तुम काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस सीनियर के साथ इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। देन तुम एक थ्रोली एक पूरे हैकाथॉन टाइप एक पीएस पे काम कर रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूरे दिन 24 घंटे उसमें दिमाग लगा रहे हो, तो काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी एक्सप्लोर करते हो तुम चीज़ें, एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट तुम्हारे खुद भी क्लियर होते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड वो तो तुम्हें ऐड करना ही चाहिए अगर तुमने किया एंड तुम सीवी में डाल रहे हो तो। देन सेम विद द जीसी थिंग, जीसी एंड जीसी एंड द ओपन आईटी है। तो ओपन आईटी के पीएस भी अच्छे आते हैं। तो जो भी तुम्हारी टीम है, जिन भी लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो, इफ तुमने भी कुछ भी कोई अच्छा सोल्यूशन बनाया है, एक अच्छा आर्किटेक्चर बनाया है, देन तुम प्लीज़ उसको डालो अपनी सीवी में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से फ्रेम करना अपनी सीवी में। तो वो काफ़ी अच्छा काम आएगा, क्योंकि उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे आते हैं जीसी और ओपन आई टी। ओपन आई टी आई थिंक इट्स मोस्टली डेटा एनालिटिक्स टाइप। लास्ट ईयर पीएस वाज आल्सो डेटा एनालिटिक्स टाइप, बट जीसी में तो काफ़ी आते हैं एजेंटिक टाइप। इसी का भी आई थिंक थोड़ा डेटा एनालिटिक्स ही रहता है बट हाँ आई वुड से कि sure jana like go to the GCDs because when you go there you meet with a lot of seniors and batchmates. You listen to their ideas. Tumko like there will be a lot of things which you don't know and you learn from them. So that is a big learning curve which I feel you get in GC. Apart from that, entirety, I would just like to add that as a second year, it can be a bit difficult. Like I have seen people who can manage accounts along with entirety, but there are people who also get squashed in the process. उनका थोड़ा सा disbalance हो जाता है. And then also CG is also a main thing which you need in CDC. So yeah, if you can do it, obviously go for it. Like it's the best thing you can do to train your skills and get in touch with the best seniors in the campus. But yeah, if you think it's a bit over, if you can't do, then it's okay. Like मैंने भी third year में आके गया था तो it's not like you have to do it right in second year. आई थिंक इन सेकेंड ईयर काफ़ी पॉलिटिक्स रहता है इंटर आई टी। हाँ सेकेंड ईयर exactly. को Yeah. वैसे काफ़ी कनेक्शन बेसिस पे जाते हैं। इसमें ऐसे कुछ वैसी बात नहीं है कि कोई सेकंड ईयर नहीं जा पा रहा, बट थर्ड ईयर में मोस्टली सबको चांसेस देते हैं। इफ यू हैव स्किल्स वो ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। ऑल्सो एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो भी तुम्हारे ऐसे जब टेस्ट वगैरह सब चल रहे होंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जो अपने टास्क देती हैं। तो वो टेस्ट नहीं लेती, ओएज नहीं लेती, तो वो टास्क देती है ऐसे हुए। तो थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि तुमको अपनी ऐसे इस प्रिपरेशन के बीच में कोई टास्क भी करने पड़ सकते हैं। आई नो टास्क तुम ऑब्वियसली एआई से बनवाएंगे, बट उसको अच्छी तरह जो भी आर्किटेक्चर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, एक बार समझ लेना है। टास्क के लिए भी रेडी। Thank you for the information. Sohani, would you like to add something? Yeah, like for GC and OpenIIT, I agree with both of them. The PS is really good for it. If you want, you will find good seniors to work on it and batchmates. So
try working on the PS of GC and OpenIT from the previous years as well. Those PS are really good for practice. And yeah, inter IIT, as Aditya said, I know in second year it can be hectic, but if you get the opportunity, I think you should go for it. Thank you for the responses. Apart from the uh, previous year selection processes, how will the new AI branch affect opportunities in CDC internship? Could you please elaborate about it? आई थिंक हमारे बैच के लिए तो नहीं है, हमारे बैच में ये आया Oh, नहीं। that will be something which अब we'll also see this year. अब तुम देखोगे। सो हमें आइडिया नहीं है इतना कि अब क्या होगा। तुम्हारा बैच सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगा ये चीज। Thank you so much, all, for sharing such incredible and practical advice tonight. We are now ready to open up the session to audience participation. Please type whatever question you have into the chat stream and we will address them. We have got a question in the chat stream. First question is, if someone has not done DSA at all and has focused more on machine learning and algorithms, how should one tackle this problem? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इन इफ तुम्हारे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इट्स गुड। बट अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 1 महीना, आई थिंक 1.5 मंथ है। तुम आराम से बेसिक डीएसए के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। बिकॉज इट है, अरे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि अगर मैं मशीन लर्निंग कर रहा है तो मैं डीएसए क्यों करूँ। बट डीएसए इज जस्ट, तुम्हारी मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिदम्स बनी है ना, वो डीएसए से के कॉन्सेप्ट्स पे बनी है। तुम उस जो भी एल्गोरिदम तुम मशीन लर्निंग में यूज करते हो उसमें ग्राफ भी यूज हुआ है, उसमें डीपी भी यूज हुआ है इंटरनली, बट तुम डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज करते हो। बट इफ कोई भी कंपनी आती है जिसको अपनी खुद से एक एल्गोरिदम बनवानी है, तुम्हें उसमें काम करना है, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम्हें डीएसए के कॉन्सेप्ट्स आते हो। नॉट दैट मच कि तुम बहुत क्रेजी हार्ड लेवल लीड कोड कर रहे हो, बट तुमको बेसिक पता होनी चाहिए, इसलिए तुम डीएसए तो करो ही along with the data thing. And one more thing, like why to do DSA along with data, is that keep I know कि the companies for data are increasing, but still the proportion between SD and data is still off. Like बहुत companies आती है SD की. So at the end of the day, data के लिए almost everyone is preparing. बहुत लोग करते हैं जो tech में. तो थोड़ा सा it gets a bit difficult. So even if you know a bit of basic DSA, medium level questions for other things, which you can do if you do this for 1.5 months if you utilize them well, then I think CDC you can even get shortlisted in the SD interviews and you can crack them easily compared to just grinding on data and then maybe I have seen in my time like there were a lot of people who afterwards said that they wish that they would have done a bit of DSA beforehand just so that they could have maybe gotten a internship in any SD company also. So yeah. Yeah, agreed. Not saying that 1.5 months is enough to complete the DSA because it takes time. But still, if you have already focused and done machine learning and algorithms, I think 1.5 months for the role of data is enough to at least complete DSA that much that you can tackle it in the interview if you start from today as well. Uh, Yeah, okay. Moving forward to the next question, like from a batch onwards, AI branch has been started. So for a person who is not in AI, can still pursue DSA? Yeah, like Yeah, Yes, absolutely. obviously. yes. Yeah, obviously. मतलब ऐसे सोचो ना, जब एआई नहीं थी तो नॉन एआई पर्सन्स कर रहे थे डीएसए। यस, हमने भी करी है। हम लोग हम लोग तीनों भी AI से नहीं है तो I think, yeah. हम भी, हाँ। तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम कि तुम नहीं हो एआई से। And I think DSA is a must if you're going in any tech field. So, yeah. Thank you for the response. Apart from it, what is the CG cutoff for each of your companies? Mine was 8. Yeah, I think mine was also 8. I think in mine, like on ERP, it was 8, but internally, as of I know, Adobe has a
very hard cutoff of 8.5. Like, I know a bunch of good folks who had a very good research profile, but just because the CG was 8.49, they did not even get a shortlist. So yeah, for Adobe specifically, I think CG matters. What is the basic common CG cutoff for all the data related companies? I guess around 7.5 to 8 is enough. Yeah. Most of the companies would be open from 7.5. Only few companies are there which takes around 8, at least for applying. And after that, internally, the CG cutoff can hike up. Thank मतलब you in for my the opinion response. it's only depend on the company. Like initially जो 1-2 months कंपनी आएंगी उनकी 7.5 प्लस ही होगी मोस्टली की कट ऑफ. देन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कंपनीज आती है कुछ की कट ऑफ वो रखते भी नहीं है, जीरो भी रखते हैं, बाद में इंटरनली शॉर्टलिस्ट कर देते हैं. तो इट डिपेंड्स कि बाद की कंपनीज क्या रहती है, कंपनी पे डिपेंड करता है सारा. बट मोस्टली अगर 7.5 से ऊपर है तो या थोड़ा से तुम सेफ हो. Thank you for the insights. On the behalf of entire organizing team, congratulations once more to our panelists on your outstanding achievements. Thank you for taking the time to share your personal experience and strategies with us this evening. Your insights will undoubtedly help many of us chart our own internship path successfully. With that, we bring today's session to a close. A sincere thank you to our brilliant guests for their priceless advice and to our highly engaged audience for tuning in. We have panel discussions on different domains in the upcoming days, so stay connected. Until our next session, best of luck to everyone and never stop moving.